our second lecture of the anesthetic consultation for the cardiac surgery. उसमें हमने बात की थी कि planning for early extubation and setup for the operation theater. And planning for the early extubation, उसमें आप क्या जाते हैं, early extubation should be planned for all the patient, and the changes we have made include limited fluid given to the patient and limiting total narcotics and benzodiazepine doses because उसके ऑलरेडी, क्योंकि वो इतना इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज ये कार्डिक सर्जरी के जो पेशेंट होते हैं वो आईसीयू में फॉर दी 12 आवर 24 आवर जो है वो सेडेटेड एंड वेंटिलेटर रहते हैं. सो रिले ऑन वोलेटाइल एजेंट्स और प्रोफॉल ड्यूरिंग द केसेस बिकॉज आपके ये आपके कंट्रोल में होते हैं कंपेयर टू narcotics and benzodiazepine. So provide the sedation post operative that is easy to get rid of. जिस तरह प्रोफॉल की है, जिस तरह आप स्टॉप करते हैं तो सडनली जो है वो 10-20 मिनट के बाद पेशेंट आपका वेक हो जाता है as compared to narcotics or benzodiazepine. So careful control of blood pressure with emergence. पंप ऑप पे जो है वो आप प्रेशर के साथ थोड़ा सा वो हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे. Talking about the setup, so the standard room setup include the suction machine and check out for the airway equipments, drugs like succinylcholine, tubentol, but usually हम tubentol को जो है वो avoid करते हैं during cardiac surgery. We should go for the ethomidate, which is cardiostable drugs and non-depolarizing muscle relaxant. Specifically आपके atracurium best है and cis atracium, which is my personal favorite. Talking about the atropine and glycopyrrolate, atropine हम usually avoid करते हैं. Glycopyrrolate is the best drugs among all the patients who are scheduled for the cardiac surgery. Ephedrine and जिसको आप कह सकते हैं साइनोफ्रीन, वो हम इन्फ्यूजन में अवेलेबल करते हैं with the dopamine infusion ready also and calcium chloride during bypass जो है वो हम देते हैं. जो हेपरिन की डोजेज हैं वो तकरीबन 300 यूनिट पर के जी हम देते हैं एंड विच इज़ 30,000 यूनिट्स ड्रॉन अप. लाइडोकेन एनिपिलिप्रिन आपके ड्रॉ में होना चाहिए. पेशेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं तो सो एटलीस्ट वन लार्ज आईवी, जिस तरह आपकी बात करते कि मोर 16 गेज के अंदर 14 जो है वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है. अब आपने लाजमी पास आउट करने हैं उस पेशेंट को. दूसरी बात ये कि या तो आप जो है वो 16 गेज के नोला एक पास कर सकते हैं, दूसरी साइड पे 18 पास कर सकते हैं. वो दूसरी साइड पे जो आर्टियल लाइन है, यूजुअली हम लेफ़्ट साइड पे आर्टियल लाइन पास करते हैं. सो arterial line on the right side, left side is occluded by retracting of the eye. में आपका अगर सर्जन फॉर एग्जांपल इंट्राब्यूरल आर्टरी डिसेक्ट कर रहे हैं तो आपके जो arterial line है वो somehow occlude होगा. So take into the room and place on the oxygen for the rest of the setup. Pre-off while getting baseline values also. Intraoperative safety की बात कर लेते हैं तो cardiac surgery has a large quantities of blood at arterial and high pressure. There's a frequent splashes, so you must wear glass, eye protection, and all the time in the operation theater. So expensive goggles around the neck are not acceptable during the operation, and put them on at all the time in the OR. Communication is very important during cardiac surgery because आपके अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ ड्रग्स जो है वो देना चाह रहे हो तो यू शुड लाउडली डिक्लेयर इट कि अगर फॉर एग्जांपल हेपरिन की बात करें तो हेपरिन एन, तो वो आपका सर्जन या परफ्यूजनिस्ट जो है वो रिपीट करेगा. या आप कोई पोजीशन करना चाह रहे हो या आप लंग्स डाउन करना चाह रहे हो तो यू शुड clearly communicate with the operation theater staff. So this operation is a long series of the repetitive procedure that is absolutely positively have to be done correctly. So in case in any or done incorrectly, the patient will suffer. Communicate with the surgeon and ask the question. Tell him what you are doing, and if you are having trouble, tell him or her, the surgeon or the perfusionist. The operation require a team approach and not a member, and you are a member of the team, so don't let your activities or a problem be a mystery to a surgeon. जो भी करना चाह रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं उसको जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा. हाइपोटेंशन ऐसा नहीं है कि सडनली आपका पेशेंट जो है वो हाइपोटेंस है वो आप उसको जो है वो वेजोप्रेशर दे. You try to avoid such activities because आपके ना ड्यूरिंग हाइपरटेंशन आप देख लें कि हर सर्जन क्या कर रहे हैं, पेशेंट पोजीशन क्या है, डोम किस तरह है जो आप बीट टू बीट हर कर रहे हैं आर्टिकुलर प्रेशर. सो
सम टाइम जो है वो सर्जन हार्ट को अप कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो रही होती है। तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल उस कंडीशन में आप एपिड्रीन जो है या फिनाइलिप्रीन या साइनिफ्रीन जो है वो आप दे देते हैं और सडनली वो हार्ट को छोड़ देते हैं, तो आपके प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। सो द सर्जन कैन काज प्रोफाउंड हाइपोटेंशन विद द कार्डिक मैनिपुलेशन, वो हार्ट के साथ खेल रहा होता है। सो इफ द प्रेशर सडनली ड्रॉप और द पीवीसी डेवलप, look at what they are doing. Before you give a drugs to treat episodic hypertension, look to see what the surgeon are doing. So if you give a drugs because of the hypertension caused by the surgeon, so उसके बाद फिर क्या होगा वो आपको पता चल जाएगी। इसे आप ड्रग्स देंगे और वो हार्ट आपके सर्जन जो है वो हार्ट को छोड़ देगा, तो आपके प्रेशर जो है वो हाई रॉकेट की तरह होगी बिल्कुल। सो स्टेट क्लियरली जब वो हार्ट को टच कर रहे हैं और आपके प्रेशर जो है वो कम होता है, जब आप उसको क्लियरली कह दें कि प्रेशर आपका इतना है, फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट जो है वो 70/30, तो आप क्लियरली कर सकें हैं प्रेशर जो है वो 70/30 है, तो आप हार्ट को छोड़ दें, तो सर्जन जो है वो हार्ट को छोड़ देगा। सो दे विल गेट द मैसेज एंड स्टॉप लिफ्टिंग अप द हार्ट। वॉच व्हाट दे आर डूइंग टू मेक श्योर यू आर हेल्पिंग, नॉट हिंडरिंग द पेशेंट और द फिनोमेना। The pre-bypass hemodynamic, उसमें आप क्या कहते हैं, you should try to keep the blood pressure within plus minus 20% of the baseline of the patient pressure। आपका हार्ट रेट जो है वो 40 और 80 के बीच में जो है वो हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। सो बाईपास हीमोडायनेमिक, जो प्री बाईपास हीमोडायनेमिक, यू शुड कीप द मीन आर्टेरियल प्रेशर विद इन द 40 टू 80। ये आपका बाईपास के टाइम जो है वो आपका प्रेशर इतना होना चाहिए। सो ड्यूरिंग द कोल्ड पीरियड ऑफ द बाईपास, जो क्रॉस क्लैम्प हम लगाते हैं, एंड बिटवीन 60 to 80 ड्यूरिंग द वार्म बाईपास, उस टाइम अगर आपका क्लैम्प लग चुका है तो आपका प्रेशर जो है वो 60 to 80 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका क्लैम्प जो है वो ऑफ है ड्यूरिंग वार्म सेशन में है, तो आपका प्रेशर जो है वो 60 to 80 होना चाहिए। There will be exceptions such as patient with the carotid vascular disease or chronic renal insufficiency that may need higher pressure, जो आपके 60 to 80 वहाँ पे G for the entire pump run. Post bypass hemodynamic, systolic pressure greater than 80 is fine. If it between the 100 and 120, everyone will be happy. अगर आपका प्रेशर जो है 120 से ज़्यादा है, so this is the patient is hypertensive, the more chance of the bleeding. Fluid tally, estimated blood loss and the fluid administered including crystalloid की बात आ जाती है, colloid की बात आ जाती है, salivary की बात आ जाती है from the pump, blood की बात आ जाती है, pump blood की बात आ जाती है, bypass prime volume जो हम डेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको bypass prime volume कहते हैं, and total fluid given by the perfusionist should be on the record and should be in the mind of the anesthetist and the surgeon also. This is a chance from the previous effort, a change from the previous efforts there where we ignore everything but the crystalloid colloid given by the anesthesia and the blood given by the anesthesia and perfusionist. So communicate करना चाहिए एक दूसरे को. The perfusionist can give a large amount of the crystalloid and we need to note it on the anesthesia record. If they give a span or extended जो colloid की बात आ जाती है in the pump prime, we should know about that too, because इसकी वजह से RBC lysis भी होती है और condition भी हैं. Talking about the induction and the intubation, never induce the patient without a surgeon who can put the patient on bypass in the room. ऐसा नहीं है कि आप एनेस्थेटाइज कर ले और सर्जन जो है वो रास्ते में हो, नहीं, सर्जन जो है वो स्टैंड बाय हो तभी आप जो है वो एनेस्थेटाइज करेंगे. So never induce without a perfusionist and a pump. They should be able to place the patient on bypass in less than 5 minutes. If the patient arrest on induction, they can't go. They can't do that. So if aren't there, you will be liable. Sternotomy is it's actually a very painful procedure. और during the induction आप उसके बाद जो है फर्स्ट स्टेप आपका स्टेनोटमी होती है, तो उसमें आपने जो है वो प्रॉपर पेशेंट को डीप सेडेट करना होता है और एनेस्थेटाइज करना होता है. सो sternotomy is a painful process that occur rapidly after an induction. Make sure the patient is adequately anesthetized. They will ask you to let the lungs down during the operation. और हम क्या करते हैं, हम जो है वो सर का डिस्कनेक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो पेशेंट की जो लंग्स है वो डाउन हो जाती हैं, तो ड्यूरिंग स्टेनोटमी जो जो लंग्स ट्रॉमा है वो उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. So you must disconnect the patient from the ventilator and reconnect off after the open of the sternum.
develop a system to prevent yourself from forgetting a place patient back to the ventilator। यूजुअली ये होता है, आप जो है वो वेंटिलेटर से वो पेशेंट को हटा देते हैं और आप पेशेंट को देख रहे हैं और बाद में आपको याद नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। सो डू नॉट रिले ऑन द अलार्म एज द ओनली रिमाइंडर। आपने जो है वो प्रॉपर विजिलेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। रीडू हार्ट स्टेनोटमी हम कब करते हैं? जब एक पेशेंट है जो उसके ऑलरेडी उसका बाईपास हो चुका है 10 साल पहले या 5 साल पहले, अब वो किसी और प्रोसीजर के लिए दोबारा आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमने ग्राफ्ट लगाए वो शायद वो स्टर्नम के साथ जो है वो चिपके हुए, और जैसे हम स्टर्नोटमी करेंगे तो उसकी वजह से वो आर्टरीज जो जो वैन है जो वेसल्स है वो रप्चर हो सकती हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने प्रॉपर कैनुलेशन पुट करनी होती है और जैसे अब आपने ब्लड अवेलेबल करना होता है। दूसरे जो सा होता है जो नॉर्मल स्टेनोटमी के लिए जो सा है वो डिफरेंट है, इन पेशेंट के जो रेडियो स्टेनोटमी के लिए जो सा होता है वो डिफरेंट होता है। आई में डाइसेक्शन, इसके लिए आपने क्या करना होता है, जैसे एक पे अगर सर्जन कहते हैं कि मैंने आई में लेना है, तो फिर आप पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और अप करेंगे, ताकि और प्रॉपर जो है वो लाइटनिंग टूवर्ड द आई में करेंगे, ताकि सर्जन को थोड़ा सा इजी हो फॉर द डाइसेक्शन ऑफ द आई में। Talking about the heparinization, so do not allow the surgeon to go on bypass without heparinization. I will discuss about the mnemonics or the criteria checklist for going on bypass and off bypass, उसमें आपके heparinization भी आ जाता है। सो बाईपास से पहले पहले आपने जो है वो हेपरानाइज करना है, और आपका एसिडी जो है वो मोर देन 500 हो तभी आप जा सकते हैं। सो द पेशेंट इज़ नॉट हेपरानाइज और आपने जो है वो क्लैंप ऑन की है, तो आपका ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, आपके ऑक्सीजनेटर सारा कुछ जो है वो क्लॉट होगा और आपका सारा पेशेंट जो है वो पेशेंट मर जाएगा। सो इफ़ द सर्जन आर प्लेसिंग कैनुला इन सम आर्टरी, आस्क इफ दे वांट द हेपरिन गिवन। So when they ask for the heparin, respond to a verbal statement, heparin N, ACT for more than 500. Then surgeon said, okay. So always use central line for the heparinization. Aspirate the blood from the line before and after the heparin dose to check to make sure the line is in vein. ऐसा नहीं है कि ब्लड ही नहीं आ रहा आपका। So dose of heparin is 300 unit per kg, which is about 21 cc of the 1000 unit per cc heparin in a 70 kg patient. So after heparinization, check for the ACT activating clotting time a minute or two after the dose. Do not use the same IV line for the draw that you are infused the heparin in. Draw an arterial blood sample. You want to check for the ACT quickly because you need above more than 450 seconds of the ACT। अगर आपका 450 से above हो तो बस उसके बाद जो है आप बाईपास पे जा सकते हैं। So go on, and that is 7.5 minutes of waiting. If you forget and you haven't drawn the blood sample, the patient is on the heparin pre-op given the same dose. Still आपने जो है वो same dose देना होता है। So do not stop pre-operative heparin. Just be careful putting the lines because bleeding के chances बहुत ज़्यादा है। So उसके बाद फिर क्या होगा कि placing the cannula. So after checking a twitch or given more non-depolarizing blocker prior to a cannula placement, if the patient take a deep breath with the atrium opening, they can have a gas embolism and have a severe injury. तो आपने proper जो है वो patient को relax करना है for the venous cannulation. Do not allow the surgeon to go on bypass without heparinization. The arterial pressure at this point should be below 120. अगर आप जो है वो aortic में cannulation करना चाह रहे हैं तो आपका pressure जो है वो 100 से कम हो। So the small cannula in the aorta has red tape on it. Should not have any bubble in it, and if you see a bubble, tell the surgeon immediately. When they are putting the aortic cannula, there's a splashes and you must have a glasses on. ये आप देख सकते हैं, ये वो वीनस कैनुलेशन है जो कि हम आपके राइट एट्री में पुट करते हैं, और ये आयोटिक कैनुला है। ये आपके कार्डियोप्लीजिया के लिए है और ये आपका बाईपास के लिए है। चेकलिस्ट फॉर गोइंग ऑन बाईपास, सो क्या हार्डाइसू हेपरिन आपने देना होता है और एसिडी करनी होती है, ड्रग्स आपने देने होते हैं, जो ड्रिप्स हैं और ट्रॉपिक सपोर्ट वो स्टॉप करने होते हैं, आपने कैथेटर को जो है वो थोड़ा सा
5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ लेके आना होता है, और यूरिन आउटपुट आपने देखना होता है, यूरिन बैग को एम्प्टी करना है, एंड उसके बाद एम्बोलिज्म जो आयोटिक कैनल है उसमें देखना होता है. So clean kills and the perfusionist, there are three easy way for the perfusionist to kill the patient. आप आपके ऑक्सीजनेटर में ऑक्सीजन नहीं हो, हेपरानाइज ना हो, और बस जो है वो आप एम्प्टी रन करें तो आपका पेशेंट जो है वो मर जाएगा. So in the next session we will discuss about the cardioplegia. This was all about the intraoperative and hemodynamics for the anesthesia for cardiac surgery.